Okay, now let's go on. Questions 26 to 30. What comments does the speaker make about each of the following aspects of Russ's previous presentation? अच्छा, अब क्या होगा? वो कहेगा लास्ट ईयर आई हैड अ प्रेजेंटेशन. जो लास्ट ईयर की प्रेजेंटेशन है उस पर आपने फोकस करना है. अगर वो प्रेजेंट की बात करे या फ्यूचर की बात करे तो वो आपका आंसर नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, प्रेजेंटेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं वो तो सिंपल हैं, उनको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. 26 क्या है, स्ट्रक्चर. 27 क्या है, आई कॉन्टैक्ट एंड ऑल दैट. असल में हमने पढ़ने हैं कमेंट्स को. कमेंट्स में ए पे आइएगा, लैक्ड अ कंक्लूजन. अब लैक्ड अ कंक्लूजन के लिए ऑडियो में क्या बोल सकता है? देयर वाज नो कंक्लूजन. या फिर क्या बोलेगा? यू एंडेड एब्रप्टली, अचानक ख़त्म कर देना. यू एंडेड एब्रप्टली. एब्रप्टली का क्या मतलब है? अचानक, सडनली. एब्रप्टली और सडनली. तो लैक्ड अ कंक्लूजन का क्या मतलब है? एंडेड एब्रप्टली. ऑप्शन बी, यूजफुल इन द फ्यूचर. अच्छा, फ्यूचर के लिए वर्ड यूज करते हैं लेटर ऑन, या फिर बोलते हैं इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, या फिर यूज करेंगे नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर, लेटर ऑन, इन द नेक्स्ट सेमेस्टर. दैट इज ऑप्शन बी. ऑप्शन सी, नॉट इनफ. जरा डिफाइन करें, नॉट इनफ की जगह पे क्या आ सकता है? नॉट इनफ की जगह पे आ सकता है इनसफिशिएंट. नॉट इनफ की जगह पे आ सकता है वेरी लिटिल. राइट, दिस कॉफी इज नॉट इनफ. देयर इज लिटिल कॉफी एंड नॉट इनफ कॉफी. ठीक है, वेरी लिटिल. ऑप्शन डी, समटाइम्स डिस्ट्रैक्टिंग. अब डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकती है? कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं जो आप ऑडियंस से आपको दूर लेके जाए. फॉर एग्जाम्पल, आपसे बात करते करते मैं ऊपर देखना शुरू कर दूं, या मैं आपसे बात करते करते बाहर देखना, ये क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन होगी. अच्छा, ये भी आया हुआ भाई, या डिस्ट्रैक्शन होगी. ठीक है, मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा. ठीक है, डिस्ट्रैक्शन. उसके बाद शोड ओरिजिनलिटी, कि पता चल रहा है कि ये आपका अपना काम. ओरिजिनलिटी का मतलब है रियल वर्क, ओरिजिनल वर्क. ग्राउंड ब्रेकिंग का वर्ड आता है ओरिजिनलिटी के लिए. ठीक है, और या फिर वर्ड आता है इट्स योर ओन वर्क. ऑप्शन एफ, कवर्ड अ वाइड रेंज, कि आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कवर किया है. इट कवर्स अ ह्यूज एरिया. इट कवर्स सो मेनी टॉपिक्स. सो मेनी टॉपिक्स का मतलब है वाइड रेंज. एंड ऑप्शन जी, नॉट टू टेक्निकल. नॉट टू टेक्निकल का मतलब है सिंपल. When something is not too technical, it means it is simple. अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 26, स्ट्रक्चर. अब होगा क्या? ये वाला हाथ आपने रखना है क्वेश्चन पे, ये पेंसिल वाला हाथ जो है मूव करेगा ए बी सी डी ई एफ जी में. जो आंसर आपको राइट लगेगा वो आपने लगाना है. ठीक है, और फोकस करना है. Okay, now let's think about actually giving the presentation. You've only given one before, if I remember correctly, about an experiment you'd been involved in. That's right. It was pretty rubbish. Let's say it was better in some respects than in others. With regard to the structure, I felt that you ended rather abruptly, without rounding it off. Be careful not to do that in next week's presentation. Okay. Yeah, you actually ended abruptly without rounding it off. राउंड ऑफ का मतलब है कंक्लूड करना. यू एंडेड एब्रप्टली विदाउट राउंडिंग इट ऑफ. सो दैट इज ऑप्शन ए, लैक्ड अ कंक्लूजन. ओके, क्वेश्चन नंबर 27, आई कॉन्टैक्ट. And you made very little eye contact with the audience because you were looking down at your notes most of the time. You need to be looking at the audience and only occasionally glancing at your notes. You made a very little eye contact with the audience. क्या मतलब है? सी शुरू में ही बोला है, दोबारा सुने. And you made very little eye contact with the audience. You made very little eye contact with the audience. That is option C. Very little means not enough. Okay, question number 28, body language. देखते हैं body language के बारे में क्या बोल रहे हैं. Your body language was a little odd. Every time you showed a slide, you turned your back on the audience so you could look at it. You should have been looking at your laptop. And you kept scratching your head, so I found myself wondering when you were next going to do that, instead of listening to what you were saying. Oh dear. So, body language was odd. You turned your back and then you were scratching your head. What does it mean? Distracting. Option D. Good. Very good. Question number 29.
Choice of words, language. What did you think of the language? I knew that not everyone was familiar with the subject, so I tried to make it as simple as I could. Yes, that came across. You used a few words that are specific to the field, but you always explained what they meant, so the audience wouldn't have had any difficulty understanding. Uh-huh. So, choice of words. G, not too technical, simple to use. दोबारा सुनिएगा. What did you think of the language? I knew that not everyone was familiar with the subject, so I tried to make it as simple as I could. Okay, I tried to make it as simple as I could. Yes, that came across. Yes, that came across. I tried to keep it as simple as I could means not too technical. Okay, question number 30, handouts. I must say, the handouts you prepared were well thought out. They were a good summary of your presentation, which people would have been able to refer to later on. So well done on that. Thank you. Handouts. People will be able to refer to later on. People will be able to refer to later on means useful in the future. Correct answer is option B. Okay, and you will write the answers in the same order. Okay.